बारे में जितना सोचा जाए read about him, and so we'll take our understanding of his complete works, especially the yoga part, which comes in the volume 1 ahead in this particular session also. And Swamiji here says that we are actually moving in the ashtanga yoga, and now once the pratyahara has been done, once we have withdrawn ourselves from the external objects or attractions, then we'll find that each day the mind's vagaries are slowly becoming less and less violent, and each day is becoming more and more calm. And within a few months, the mind will have a great many thoughts. Later, you will find that they have somewhat decreased, and in few more months, they will be fewer and fewer. Ultimately, it will be possible for you to have a perfect control. So धीरे धीरे शनै शनै कुछ महीनों के अभ्यास के बाद समझेगा कि आपके मन का जो सारा एक प्रकार का पशुत्व था, न सुनने की प्रेरणा थी उसकी, किसी के वश में वो नहीं था, ऐसे प्रकार के बहुत ही अनिर्बंध इस प्रकार के उसके व्यवहार पर अब लगाम खींची गई है, वो शांत हो रहा है, धीरे धीरे विचारों की संख्या कम हो रही है और आप ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर भी नियंत्रण पा रहे हैं. So as soon as the steam is turned on, the engine must run. वैसे ही जैसे बाष्प का जो इंजन है, जो एक बार चालू कर दिया तो वो पानी के उबल कर जो बाष्प बनता है वो वायु रूप में उसको आगे अपने आप ही चलते रहता है. तो ये उसकी अवस्था है. बट द थिंग्स आर बिफोर अस, वी मस्ट परसीव. सो मैन टू प्रूव दैट ही इज नॉट अ मशीन मस्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट ही इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नथिंग. मतलब एक मशीन जैसा है किसी शक्ति के कंट्रोल में रहता है, वैसे मनुष्य नहीं है. ये आपको सिद्ध करने के लिए इस सब योगाभ्यास की जरूरत है. और इसलिए अगर आप किसी यंत्रवत किसी शक्ति के बंधे हुए गुलाम नहीं है, तो आपको प्रत्याहार से अपनी शक्तियों को, अपनी सारी इच्छाओं को पीछे कैसे खींच लेना है, अपने वश में कैसे रखना है, बाह्य चीजों के पीछे नहीं भागने देना है, ये बहुत विशेष उसका भाग है. बहुत कठिन काम है. इट्स अ ट्रेमेंडस वर्क, cannot be done in a day. But only after patient continuous struggle for years you can succeed. And after you have practiced pratyahara for a time, take the next step, which is dharana. But you have to hold your mind to certain points. What is meant by holding the mind to certain points? Forcing the mind to feel certain parts of the body to exclusion of the others. For instance, try to feel only the hand to the exclusion of other parts. सिर्फ हाथ के बारे में सोचो, उसकी ऊपर पूरा धारणा कर दो, बाकी सब शरीर के भाव को भूल जाओ. ये एक साधना है. And the chitta or the mind stuff is confined and limited to a certain place. It is called dharana. When your चित्त या मन आपका किसी एक चीज पर पूरी तरह से केंद्रित हो जाता है, उसको धारणा कहते हैं. And this dharana is of various sorts, and along with it is better to have little play of the imagination. For instance, the mind should be made to think of point in the heart. ऐसे आप कल्पना शक्ति का प्रयोग उसमें कर सकते हैं. मान लो आपके हृदय की तरफ आपका पूरी धारणा है, और उससे भी आप ऐसा कल्पना कीजिए कि वहां एक कमल है, वो कमल खिला है और आप उसकी तरफ देख रहे हैं, उसी के ऊपर आपका पूरा ध्यान है. इस प्रकार की कल्पना भी आपको लाभदायक हो सकती है. सो धारणा इज ऑफ वेरियस सॉर्ट्स. अलोंग विथ इट इज बेटर टू हैव लिटिल प्ले ऑफ इमेजिनेशन. कल्पना से अगर आप उसकी तरफ देखेंगे तो और उसमें आपको अधिकाधिक सुविधाएं बन सकती है. एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू लर्न हाउ टू ब्रिंग इट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट. एंड देन द ब्रेन इज फुल ऑफ लाइट. वो आपका सबसे बड़ा जो चक्र है वो सहस्रार चक्र है. मूलाधार से शुरुआत करके आप अलग अलग चक्रों पर आपका केंद्र धारणा कर सकते हैं. जो सारी प्रकाश का जो सारा हमारा स्रोत है वो हमारे मस्तिष्क में रहने वाला 1000 पेटल लोटस जो रहता है वैसा है. तो जैसे हम लोग जानते हैं योगा में इड़ा पिंगला दो नाड़ियों के बीच में सुषुम्ना है, उसमें से कुंडलिनी चालू होकर ऊपर आती है. इसलिए इस सारे सेंटर्स पे उसका धारणा होती है. Yogi must always practice. He should try to live alone. The companionship of different sorts people distract the mind. तो एकांत में रहने का आपको अभ्यास होना चाहिए. वो सबके साथ सदा मिलते रहने से आपका एकाग्रता भंग हो जाती है. आपकी ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए. ज्यादा बात करने से you get distracted and should not work too much also. ना ज्यादा काम, ना ज्यादा आलस्य से आराम,
ना ज्यादा खाना, ना कम खाना, ना बहुत ज्यादा लोगों से बातें करना, ना बिल्कुल लोगों से विपरीत। ऐसा है कि लोगों के साथ अभी रह भी नहीं सकते, ऐसा भी नहीं है। सो समत्वम योग उच्यते, सब में एक प्रकार का बैलेंस सबको रखना है। किसी को भी डोंट, यू शुड नॉट हर्ट एनीवन, इट विल बेनिफिट एवरीबॉडी, इस प्रकार करना है। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड टोन डाउन द नर्वस एक्साइटमेंट, bring the calmness in your body, enable us to see things more clearly, and the temperament will be better and the health will be better. Sound health will be one of the first signs and a big voice. वाणी बहुत ही मधुर हो जाएगी, अनेक चीजों में आपको फिर कोई भी क्या कहते हैं उसको, आप शांत हो जाएंगे, कोई भी एक्साइटमेंट आपको टच नहीं करेगी, और बहुत ही सीधे टेम्परामेंट, बहुत ही शांत एक प्रकार से विचारी अवस्था में आप हर चीजों पर ध्यान दे सकते हैं। जैसे ही आपके बॉडी में अगर कोई दोष भी है, इफ देयर आर डिफेक्ट्स इन योर वॉइस आल्सो, दे कैन बी क्योर्ड बाय दिस प्रैक्टिस, एंड दिस विल बी अमंग द फर्स्ट ऑफ द मेनी इफेक्ट्स व्हिच कैन बी सीन। वाणी का इफेक्ट सबसे पहले दिखता है। ये वाणी हमारे यहाँ सबसे, मौखिक परंपरा में वाणी पे ही सब कुछ हमारा, शिक्षा, व्याकरण, सब कुछ उसी से आ रहा था, हमारा वेदों का अध्ययन। इसलिए वाणी के ऊपर ध्यान पहले केंद्रित कर सकते हैं। दोज हु प्रैक्टिस हार्ड विल गेट मेनी अदर साइंस, some may hear sound, some may have a bell ringing, that all is possible, but ये सब स्टेशन से ये मिलते हैं, प्रकाश दिखता है, किसी को ध्वनि दिखते हैं, किसी को मधुर नाद आता है शंख का या घंटियों का। लेकिन इसके अलावा भी आप करते रहना है आपको, यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड। आए ना आए ऐसे अनुभव, फिर भी आपको करते रहना है। और इसके साथ ही स्वामी जी कहते हैं कि यू हैव टू टेक ग्रेट कंट्रोल ऑफ योर डाइट, because diet is everything, because if you want to do this as a serious practice, you can't eat too much, otherwise whole energy will go in only digestion. And if you want to make a very rapid progress, then you have to practice hard. A very strict diet is absolutely necessary. You will find it advantageous to live only on milk and cereals for some months, and as the organization becomes finer and finer, it will be found in the beginning that the least irregularity throws one out of the balance. One bit of food more or less will disturb the whole system until one gets perfect control. Then it will be okay if you want little bit. उसके बाद थोड़ा सा आप ध्यान नहीं देंगे खाने पे तो ठीक है, लेकिन जब तक आपकी प्रगति हो रही है उस मार्ग में आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे स्वामी जी हमको बताते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जब स्वामी जी की वाणी सुनते हैं, तो उनके बारे में ध्यान करते हैं, तो हमें बहुत कुछ उससे पता, लाभान्वित हम लोग होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। Further, he says that he who can become mad with an idea, he alone can see the light. तो अगर सचमुच सत्य की खोज आप कर रहे हैं, आपको ज्ञान चाहिए, आपको प्रकाश चाहिए, तो आपको एक कल्पना से बिल्कुल आपको पागल होना चाहिए। आप उसकी कल्पना के पीछे, आप, उन्होंने एक दूसरे कोटेशन में उन्होंने कहा कि टेक अप वन आइडिया, मेक दैट आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, and just forget everything else. Let that whole idea be your life, and such people alone can see the light. The rest are just talking machines. इसलिए एक चीज पर पूरी तरह से धारणा होना बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो यही योगाभ्यास है, यही साधन है। And then here nibble, there the nibble, they cannot attain anything. They may internet the nerves for a moment, but there is, it will end. They will be slaves in the hands of the nature. प्रकृति के वो गुलाम बन के रहते हैं, कभी ये छोटा सा किया, वो थोड़ा थोड़ी देर के लिए वो किया, कुछ मैंने ये अच्छा लगा, कुछ साल वो अच्छा लगा, ये ऐसे तो भटकते रहने से कुछ नहीं मिलता है। आप एक ही जगह पर श्री राम कृष्ण कहते हुए, आप अगर खोदते जाएंगे तो एक आपको पानी मिलेगा। आपको एक ही जगह पर एक कुआं खोदना है, 100 जगह पर छोटे छोटे कुएं खोदने से पानी नहीं मिलेगा। वही बात यहाँ पर वो कह रहे हैं। एंड दोज हु रियली वांट टू बी योगीज मस्ट गिव अप वंस फॉर ऑल दिस निबलिंग एट थिंग्स, टेक अप वन आइडिया, and then just avoid all the people, all the company which are trying to distract you, take you away from this your grand idea and your vision. And whether good company or bad company, there are always limitation on anyone else. So you are your own light, Atma Deepo Bhava. You have to practice hard. Nobody else is going to help you in this. What matters actually, whether you live or die, it does not matter. आप उसमें जिंदा रहते हैं, ये सब प्रयोग में, साधना में, आप मर जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ध्येय मार्ग पर चलते चलते आपका अगर मरण भी आपको आ जाए, वो भी स्वागतार्ह है, लेकिन उसको छोड़ के दूसरे यहाँ वहां भटकते रहने से जीवन का बहुत बड़ी हानि है। मनुष्य जन्म मिलने के बाद
इस प्रकार का साधन न करना, परमार्थ की प्राप्ति के लिए कुछ भी न करना, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है, ऐसा हमारा तत्वज्ञान कहते हैं। इसलिए पूरा अपनी शक्ति जो है, आपका दिन रात, आपका जो हो गया सो हो गया, जितने साल गए थे, अभी तो कम से कम एक चीज पर आ जाओ, बाकी सब डिस्ट्रैक्शन को छोड़ दो। इस प्रकार का ये काम हमें करना पड़ता है। So those who take up just one bit of it and little of everything, they don't make any progress. It is of no use simply to take a course of lessons. And those who just are full of tamas and ignorance and dull and are not very sincere about all these things, those minds are not fixed in any idea, keep on dwelling on different things at different points of time, they will never do a progress. To do a progress, you have to actually, for these people, such people who are simply taking ideas after ideas as an amusement, for them, religion philosophy is also a sort of entertainment, Swamiji says. They are simply objects of entertainment for them. That should not be the criteria. That should not be the attitude towards all these things. It's a very serious matter. It's one of the most meaningful thing in the life, Paramartha. So it has to be taken very sincerely. Take one thing, be on that, and do not leave it till you get the end of the tunnel. And go persevere. Perseverance is everything. So such people who are unpersevering, what they do is they hear a talk, they say it is very nice, they go home and then they forget everything about it. And then again they hear some talk some other time. So that's not the way to succeed in this difficult path. It's a arduous path. The path of the truth, Swamiji says, is the toughest part, the steepest part, and therefore perseverance is everything. And such people with high perseverance and patience and power and the willpower are dynamos of energy and character. They say, I will drink the ocean. In front of me, the mountains will crumble up. Have that sort of energy, Swamiji says. And that sort of work, that sort of energy, that sort of will to work very hard till you reach the goal. Uttishtata, Jagrata, Pratyahara, Bodhata. Arise, awake, and stop not till your goal is reached. His goal is this goal. एंड देयरफॉर ऐसे आपको लगना चाहिए कि मैं ऐसी दुर्दम्य इच्छा शक्ति में जो है, ऐसा साहस है, ऐसी अड़िग श्रद्धा है कि मैं इस पथ पे अगर एक बार आ गया तो उसको छोड़ूंगा नहीं। और इसलिए मेरे सामने पर्वत की क्या है, पर्वत झुक जाएंगे, उसके चूर्ण हो जाएंगे, मैं सागर को पी जाऊंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। जैसे हनुमान समुद्र लांग कर गए थे, या स्वामी जी भी समुद्र लांग कर अमेरिका में गए थे, यही दुर्दम्य इच्छा शक्ति उनके पास थी। जैसे भगवती कहते कि नीति नीति निपुणाम यदि वा स्तुवन्तु। तो ये एक पल भी अपने पद से ऐसे धीर जो होते हैं वो हिलते नहीं है, एक क्षण भी अपने जो उनका लक्ष्य है उसको वो भूलते नहीं है। इस प्रकार का हम अधिक विश्वास, और असीम साहस इस प्रकार से होगा तो ही हम लोग योग मार्ग। अगली जो कड़ी है ध्यान और समाधि, उनका 7वां प्रकरण, the 7th chapter, he says we have taken a cursory view of different stages of yoga. And except in final ones, the training in concentration, which is the goal to which Raj Yoga will lead us, we see as human beings that all our knowledge, which we call rational, is referred as consciousness. अभी थोड़ा सा चैतन्य का जो सारा प्रवाह है या उसके बारे में हमें सोचने में वो मजबूर करते हैं कि ये क्या हो सकता है कि हमारे तर्क के पृष्ठभूमि पर या by using our intellect and our rational mind, we try to get knowledge about different things. So in short, whatever we can see and we are able to perceive, he gives some examples. He says, my consciousness is of this table and of your presence, and therefore I say this is the table and these are you, all people sitting in front of me to listen to me. So you are in my consciousness, and therefore I am conscious of you. That means I know that you are there. I know about you. I know your Nam and Rupa, your name and your form, and I associate it with some other thing which is already there stored in my brain. This is one part of consciousness. We can say this is the consciousness of the external objects. But then Swamiji immediately says, but there are other things also. For example, the things happening inside me. So I take the food, but that I'm conscious that I'm taking the food. I eat the food. I do it consciously. When I assimilate it, when I digest it, it's happening unconsciously. When my heart is pumping the blood and circulating, it is happening unconsciously. I'm not aware of it, but I know that it's happening. That's why I'm living. So there are many things inside me which I cannot see. I'm not actually conscious of that, and they are happening unconsciously or unknowingly to my perception. But that does not mean that they are not there or they are not consciously happening at their point of view or their level. So this is how
our perception or our level of consciousness decides where we are looking at. Since human beings are at the point of mind, so for whatever are the lower ideas of physical, vital, have been already become the, they are below the mental level, or they are the subconscious and ultimately unconscious for us. Whatever is above mental level, that is the superconscious for us. But that does not mean the consciousness is not there in all the levels. Manifestation is different. The level of its expression is different, but they are similarly. That's why he gives example of things happening inside me. My heart is beating apparently without my control. None of us here can control the heart. It goes on its own way. So nearly every part of the body can be brought under control by the yoga. The yoga's specialty is that you should become conscious of what is happening. Other than your waking outside world, there is so much of happening inside you, beyond you, beneath you. So be conscious of your breathing, be conscious of your inside mechanisms, your heartbeats, and you can even have complete control of that. The yogis are able to completely control the heart and their breathing and everything they are able to control as they progress, of course, not in the beginning. And therefore, that is how he says the functions which are beneath consciousness are also performed by us, only we are doing it unconsciously. So these are different levels of consciousness, different things are happening. He says, so we have then two planes in which the human mind works. First is the conscious plane, in which all the work is accompanied, especially in the external world, and there is always a feeling of egoism associated with it. बाहरी जगत में हम लोग जिसके बारे में हम लोग जागृत अवस्था हम कह सकते हैं, हम लोग चेतन अवस्था, हमारी चेतन अवस्था हमारी है, और हमारे भीतर हो रहा है उसकी अर्ध चेतन या अचेतन अवस्था में हम लोग उसके बारे में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां चेतना नहीं है, क्योंकि क्रियाएं हो रही है, उसके परिणाम दिख रहे हैं। तो अगर हमें किसी बात बारे में हम लोग सजग है या जागृत है या हमें उसके बारे में चेतना का अनुभव हो रहा है, तो हमेशा उसके साथ एक अहंकार की भावना भी उसमें आ जाती है। हम उसके बारे में इगोइज्म का भी भाव उसमें आ जाता है, फीलिंग ऑफ इगोइज्म स्वामी जी कहते हैं। एंड दैट पार्ट ऑफ माइंड वर्क विच इज अकम्पनीड अनअकम्पनीड बाय द इगोइज्म थॉट, जब भी अहंकार की भावना उसमें नहीं होती, तब आप कह सकते हैं कि ये अर्धचेतन या अचेतन अवस्था में इट्स हैपनिंग एट द अनकॉन्शियस लेवल, अनकॉन्शियस वर्क इज हैपनिंग। एंड दैट इज द डिफरेंस, यू कैन से द देह बुद्धि, और जिसको हम लोग कहते हैं कि मैं की भावना, मी या मैं या आई, ये जो भावना है कि मैं कुछ हूं और मेरा ये नाम है और ये मेरा हाथ है और ये काम बाहर हो रहा है, आई एम अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग एंड आई अटैच माई सेल्फ विद दैट एज माई ईगो, दैट्स अ डिफरेंट लेवल. Things happening without your sense of egoism are the different level. So the feeling of egoism is only the middle plane. If you go much above, there is no sort of egoism. If you go too below, there is also no sort of egoism. तो जो हमारी जो एक मध्यावस्था है, जिसको गीता भी बहुत सुंदर भगवत गीता उसको व्यक्त मध्य कहती है, वो बीच में की अवस्था है. उसके ऊपर भी कई सारी चीजें हो रही है जिसके बारे में हम लोग अभी, अब मेरा अहम की भावना या मैं उसको नहीं देख पा रहा हूँ, मेरी चेतना किस तरह पर वो नहीं है. सुपर कॉन्शियस लेवल पे, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल भी कुछ हो रहा है जिसके बारे में मेरा अहम, मुझे कोई भी मुझे उसके बारे में ज्ञात नहीं है, बट स्टिल दे आर हैपनिंग. सो दोनों जो, अब उस दोनों में फर्क कैसा करें, स्वामी जी आगे बहुत सुंदर है, हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन दैट, बिकॉज द माइंड इज अबोव, I mean, when the mind is above or below that line, you think that there is no feeling of I. Above also there is something, below also there is something. Only the middle part you have the feeling of mind thinking about something, ego getting attached to that. That's the middle level of our existence, human existence. And therefore, when you cross that line, above it can become a samadhi or super consciousness. If you deep down go below, it can become unconsciousness. So there is a pashu, there is a veera, there is a dai. You use the words from the tantra. Or there is a subconscious, there is conscious, and there is superconscious. There is a submental, mental, and supramental. So these all things are actually signifying the same thing. There is a Muladhara chakra, and then there is a you can say Ajna chakra, and there is a Sahasrara chakra. So there are different levels of these things happening, just to understand that. But how to differentiate? Because when the wheel is rotating too fast, it will again look stationary. Extremes look same, but how to differentiate between them? The tamas and the sattva may look same. Too much of velocity of something and no velocity at all can look same. And a person in deep sleep with a unconscious level of a animal nature and the person at the divine nature at a great superconscious level, both may look same externally.
But how to differentiate between them? So that is further what Swamiji explains, that when a man goes into deep sleep, he enters the plane beneath consciousness. He works the body all the time. He breathes, he moves the body, perhaps in his sleep without any accompanying or feeling. Ego, वहाँ भी वही feeling है. But when he comes out of sleep, he is same as he was before. There is no transformation happen. Whatever he carried as a fool, as a subhuman person, as an animal, and went in the sleep, he will come out with the same fool. Somebody says in his characteristic, you can say style, he says that a fool will come out as a fool. But suppose a fool goes into the superconscious, that samadhi state, then he will come out as a sage. So that's the difference between the two similar looking but totally different extremes of life. So from one stage, the person comes out as he went inside. From the other stage, he comes out with complete transformation. यही वो दोनों स्थितियों का फर्क है. एक में आपको पूरा ज्ञान मिला है, दोनों का जो किसी भी चीज की अवस्था उसके परिणाम की स्वरूप देख सकते हैं. तो यहाँ परिणाम बहुत ही उच्च हो गया है, एक सुपर कॉन्शियस या समाधि अवस्था में हो गए. और इसीलिए जैसे श्री रामकृष्ण ने उनको हाथ लगाया, 2-3 दिन तक स्वामी जी को पूरी दुनिया घूम रही थी. हर चीज का उन्हें पहली बार अद्वैत का अनुभव हुआ कि ये लोटा और ये मैं और ये मिट्टी और ये मेरा घर और ये मेरे आसपास का रास्ता और लोग सब लोग एक ही इसमें मानो पिघल रहे. एवरीथिंग इज मेल्टेड इनटू समथिंग वन. And he got that super conscious anubhava of the samadhi just by a touch of a person who was realized. So that is how you can see the things. The difference in the extremes are visible because of the impact of that and the effect of that, which is very visible. You can't deny that thing which has. You can see. स्वामी तो कहते हैं कि आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है. आपकी चेहरे की जो तेज है, आपके चेहरे पर जो आपकी वाणी में जो आपकी प्रखरता और मधुरता है, उससे ही लोगों को पता चलेगा कि ये कौन सी अवस्था से बोल रही है. तामसिक अवस्था से बात कर रहे हैं या सात्विक अवस्था से कर रहे हैं, ये सुपर कॉन्शियस लेवल में समाधि अनुभव से बात कर रहे हैं, या ये गहरी नींद में जाकर बिल्कुल अपने आप को भूल कर ये बातें कर रहे हैं. दोनों स्थितियां सेम दिखती है, दोनों सेम नहीं. कई हमारे संत भी कई बार ऐसे उनको लोग समझते थे कि ये तो पिशाचवत है. हमारे यहाँ एक प्रघात भी है कि जस्ट टू अवॉइड टू मेनी पीपल ऑब्स्ट्रक्टिंग और डिस्टर्बिंग योर साधना, just try to get a mask of as if you are also same like that lower species, extremely dull and tamasic, and that type of thing will look, but actually they are at the other extreme. They are just playing with that game from one end to the other end so that people will not disturb them. वो हमेशा उनको आके परेशान न करें, इसलिए वो लोगों से दूर रहने के लिए इस प्रकार का भी आवरण वो पहन लेते थे. So this is just one beautiful understanding of these two extremes Swamiji is giving. All these questions, whether there is a immortal soul or whether there is a God or not, whether there is any supreme intelligence which is governing all these things or not, ये सब मानवीय बुद्धि और तर्क के बहुत आगे है. You can't think of these things by pure reason. There's office and limitations of reason. इसलिए नैषा तर्केण मतिरापनीय, ये यहाँ बुद्धि नहीं पहुंच सकती. योग बुद्धि तर्कस्तु सा. तो जहां जो भी मनुष्य जीवन को सबसे बड़ा दुष्प्राप्य, सबसे परमार्थ उसको प्रदान करने वाला, जीवन का सही मूल्य देने वाला है, वो सारे तर्क की सीमा के परे है. और इसलिए वो अगर वो नहीं किया तो हम क्या करते कि हमारी कक्षा में गोल गोल घूमते रहते. इसलिए इस सीमाओं को, ये तर्क की सीमा, ये देह की सीमा, ये देह बुद्धि की सीमा, इसको लांघने का सीमा उल्लंघन करना बहुत जरूरी होता है. अदरवाइज कुछ अर्थ नहीं रहता है. It is very important, therefore, that we should have answers for these questions. Who am I? What is my life for? What is this whole existence about? Is there any God? If it is there, then what is the role of it in this entire creation? Can I see and can I experience that whole thing? So ये मुख्य प्रश्न है. बाकी सारे उसका केवल जीवन के लिए लगने वाली तात्कालिक चीजें हैं. Life is only a short play. If the universe is only the fortuitous combination of atoms, then why should I do good to others? Look, Sarah, ethics, all ethics and morality is actually coming from this particular fundamental understanding. If everything is just going to be a temporary thing, then why I should behave good with others? Why I should have the fellow feeling for the others? So only when there is a Advaita understanding for the other, can we call a seed that it's, and therefore then they have no issues of why I should be good with others, because you are same like the others. There is no other actually. You are one with the other.
कि आपको यही अच्छा होगा आपके लिए कि आप सबके साथ जो है वही आप करें, क्योंकि यही आपका स्वरूप भी वही है, यू आर द सेम एज दोस पीपल। तो ये बहुत ही सुंदर विचार स्वामी जी हमारे सामने रखते हैं, और इसलिए हम लोग क्रमशः जो ये सारा भाग हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, उसमें हमें इसका काफी लाभ हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा रुकते हैं और आगे के